हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको मेरी आवाज़ मिल रही है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं एंड काइंड ऑफ इसलिए क्योंकि न्यूज़ में हम सब सुन रहे हैं कि देयर इज़ कोविड थर्ड वेव। सो लेट्स सी, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी विल डेफिनेटली आउटकम दिस। एंड अगेन आज का ये लाइव भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ एक बहुत ही हैपनिंग इन्फ्लुएंसर, मॉम इन्फ्लुएंसर, शी हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीटास्कर कहना गलत नहीं होगा, नोरा, जिनका इंस्टा हैंडल है अ क्लासिक मॉम। सो विदाउट वेटिंग, लेट्स जस्ट गेट हर इन। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आई थिंक सिंस नोरा इज अ मॉम इन्फ्लुएंसर, विल बी टॉकिंग अबाउट कूल पेरेंटिंग टिप्स, कैसे वो बहुत सारी चीजें जगल करती है। ओके, सो आई थिंक नोरा इज हियर। हाय Hi. नोरा, हाउ आर यू? Hi. Can you hear me? यस, वी कैन हियर यू। हाउ आर यू? I'm fine. How are you? I'm absolutely fine and so good to see and so happy that we could finally connect on this live. I know this has been long due. So Yes, but I'm yeah, super happy that finally you made it and we could actually plan it out. absolutely. I have my coffee with me and let's start. Yes, of course. So, Nora, this whole live thing will be like more in, it will be like Hindi and English. So I hope हाँ that's हाँ, absolutely fine. absolutely. Because, थोड़ा broken हिंदी है मेरा. yeah. So Because, but I हमने think I'll एक manage. ट्रेंड देखा है, कि हाँ जी. Instagram is all about, talking in very good English and all those हम्म things, but I do not agree to it absolutely. मैं बहुत देसी हम्म हूँ, so I believe हम्म हम्म. Hindi is there, so Hindi has to be there. What do हाँ you say? हाँ, absolutely. English is Yeah, cool is enough, the right thing. is Yes. the right thing, So and how it's you okay. have been? How you have been for the last few months? क्या कर रहे हैं आप आजकल? क्या कुछ चल रहा है? So many things happening. I think Yeah. last जब हम मिले थे तब ये डेवलपमेंट नहीं हुआ था. It is Okay. a small little development in my life. I mean, Wow. some We things would have. love to know that. So yeah, so basically I was full time I was into content creation before, Yeah. Yeah. and into videos and everything. So I was Yeah. freelancing. Just tell me Mm-hmm. if is my camera okay? I mean, you can see me, right? I mean, Yeah. I mean, I it's like fine. we would like it's like this the face. The face should be there. I think It's आपका head there. थोड़ा सा chop हो रहा Cool. है. थोड़ा सा. Okay. Okay. Yeah. I think Is this is this better. fine? Yeah. Okay. Okay. Yeah. All Okay. right. So that's how it was. It was basically, for the past many years, I've been Okay. focusing on writing, creating Okay. content, doing videos, Wow. collaborating with brands, and many, Mm-hmm. many other things, learning Okay. as I was doing. But Yeah. then I was kind of missing work a lot. So Mm-hmm. I wanted to go back full time into a job setup, and Okay. I was trying. So, like, how things are after, Yes. though I was not on a break, but after taking a Hmm. break, it's a little tough to get back to the regular Agree. corporate Agree. world. तो वो Right. वही हो गया था. तो थोड़ा टाइम लगा, but then I've come back, and Okay. abhi I'm currently working as a digital marketing person and Wow. influencer Okay. marketing करती हूँ with an agency called Critical Edge. So Okay. that's what is keeping me busy. तो वो हम आई मीन I'm ये भी करना है मुझे. I mean ये तो Right. छूटेगा नहीं जैसे भी. Of course. It's a part of me. तो वो तो definitely रहेगा. So Yes. So बस Nora, trying to like balance both. we were like discussing कि जी. आज के इस life में we are talking about since you are a mom influencer, हम्म so definitely cool parenting. This is हम्म a new term which is there हम्म Instagram पे कि what is हम्म all cool parenting about. So हम उसके हम्म. बारे में बात करेंगे. Of course, we have seen your page, a जी classic mom. So I जी. have to know definitely classic mom. ये जो नाम आपने रखा है पेज का, हम्म इसके पीछे सीक्रेट कुछ तो है जो आपने इसको सोच के रखा होगा. वी हम्म वांट टू नो अबाउट योर सन.
हम्म। जिनके साथ आपने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, जी एंड कैसे आपने स्टार्ट किया, एंड ऑफ कोर्स you have been working and you have worked with a lot of good brands, Indian home brands. So tell जी us about all those collabs and everything. Start with those things. ओके सो ओके लेट मी आई टेक वन क्वेश्चन वन बाय वन। तो पहले Sure. जो आपने पूछा कि अ क्लासिक मॉम कैसे हुआ एंड Yes. हाउ Yes. things turned up. So basically, I am a fan of everything that is classic. Okay. मैं इतना ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती. Okay. सो आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज अ मिक्स विथ हाँ. वो एक बैलेंस होना चाहिए. सो कुछ Right. चीजें मेरी क्लासिक स्टाइल होती है ऑफ कोर्स विथ थोड़ा सा अपना भी फ्लेवर होता है एंड recent Right. trends का भी you will see certain things that's covered in my channel. So वो मैं एक चीज हमेशा constant रखती हूँ कि you will not find absolutely things जो कि totally out of topic या मेरे हम्म. जॉनरा से बाहर हो. मैं Right. वो अपना नीश मेंटेन करके रखा है. दैट्स हम्म. हम्म. माय ओनली एफर्ट एंड मैं ऐसे आई डोंट गो ब्लाइंडली फॉलोइंग Following the trend. ब्रांड्स. Right. ट्रेंड भी है ब्रांड्स भी मैं ऐसे Right. हर ब्रांड के साथ टाई अप या कोलैबोरेट नहीं करती. हम्म. मैं उन्हीं हम्म. ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती हूँ जो समहाउ जो मेरे फीड में फिट बैठे. Correct. जो That's true. मे बी मैं I will either I aspire to work with them or I aspire to Mm-hmm. use those brands kabhi in my this thing Right. and things that is related things that are जो मेरे interest के अंदर भी है. Right. And most of them is around because parenting is something जो मैं learn कर रही हूँ. Yes. Absolutely. तो वो around that around Mm-hmm. kids brand and all that. So Right. you will see most of them are those kind of brands in my feed. तो मैं वो चीज I have kept constant whether Right. it's the choice of brand and the content जो मैं करती हूँ. हमेशा से Mm-hmm. आप देखिएगा एक मैसेज होता है या I try to at least मैं अपने एंड से तो ट्राई That's करती true. हूँ. That's true. तो That's वो true. अब मैं अपने नीश के बियॉन्ड नहीं करती. सो यू नेवर फाइंड मेकअप इन माय दिस थिंग. No, I'm very bad at Right. makeup. Maybe I will No, ever no, no, try. absolutely not. तो वो चीजें हैं वो चीजें मैंने Right. दिमाग में रखी हैं. एंड मैंने पेरेंटिंग एक जॉनरा इसीलिए भी चूज किया बिकॉज मैं अभी वही फेज से गुजर रही हूँ एंड दैट्स Agree. समथिंग दैट इज That's true. टोटली क्लोज टू माय हार्ट एंड So, समथिंग so, दैट so, आई कैन. since you have a son and जी. you are a parent, so हम्म. आपसे better कोई नहीं बताएगा. So, हम्म. ये cool parenting जो आजकल millennials इस term को लेकर आए हैं, what is it actually? And मतलब ओके क्या लेट मी है? टेल What यू is it? व्हाट इज इट. तो वो अलग अलग आपको डेफिनेशन मिलेगा एंड एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट टेक ऑन इट. बट Yeah. व्हाट आई फील हर पेरेंट अपने आप को एक वो कूल पेरेंट कहलाना चाहता है. Right. जी. चाहे वो इनिशियल हो या बाद में ऑल्सो टू प्रूव टू देयर चाइल्ड दैट ओ सी आई एम अ वेरी कूल पर्सन सो यू शुड हैंग Right. अराउंड विथ मी या आपसे बेहतर मैं जानता हूँ या जानती हूँ. Mm-hmm. बट मेरे हिसाब से वो इंस्टेड ऑफ बीइंग समबडी एल्स मेरे हिसाब से बहुत लोग मुझे भी आके बोलते हैं कि तुम बड़ी कूल हो और तुम वी लाइक द वे द केमिस्ट्री यू हैव विथ लक्ष्य मतलब Mm-hmm. विथ माय सन Yeah. एंड Yeah. ऑल दोस थिंग्स दैट यू डू. सो ये सब चीजें मैं कोई भी चीज मेरे एंड पे मेड अप नहीं है. जो चीज आपको Right. दिखती है इट इज देयर. That's very तो natural. हाँ दैट्स हाउ आई एम अ Right. लाइवली पर्सन. आई लाफ अ लॉट. मैं So you फन agree कि चीजें करती लक्ष्य हूँ. के सो साथ मैं कोई अगर आप चीज आई ऐसे डोंट हो. प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स. Right. मैं Right. मे बी मुझे कोई चीज इंस्पिरेशनल लगे तो मैं थोड़ा बहुत अपने फ्लेवर में डाल Right. के मैं करती हूँ. बट मैं Right. ऐसे कोई चीज देख के ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगी अंटिल अनलेस मैं अपने True. एंड पे टेस्ट करूँ. ना ही मैं True. किसी और पेरेंट को बोलूंगी कि यू शुड गो अहेड एंड डू दैट बिकॉज देन इट्स नॉट यू. आप कितने दिन तक कोई और बन के रहेंगे. कितने दिन And तक yes, आप कूल especially बनने के एक्टिंग कर सोशल सकते हो. मीडिया पर दिखाने के लिए तो बिल्कुल हाँ मत करिएगा.
बिल्कुल Please do नहीं। not do this. बिल्कुल भी नहीं। सो वो आप So, जितना आप yeah. रियलिस्टिक रख सकते हैं पेरेंटिंग को उतना रखना चाहिए, चाहे वो कूल हो नहीं कूल हो भाई, मदर सब कूल होते हैं। यू नो, क्योंकि काफी Yeah. कुछ उनको करना पड़ता है। सो आई फील हर मदर हर पेरेंट इज प्रीटी कूल इन देयर Yeah, ओन and I वे। think Nora, a lot of us, have joined our live जी also, and I feel जी। कि बहुत सारे लोग इनमें मम्स भी होंगी, and I'm sure कि हम्म। अगर आप हमारा लाइव देख रहे हैं, so please drop a comment and राइट। कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, so this is the place, this is the right time. So do श्योर। join us and drop your comments, and we would love to chit chat over here and know about these parenting tips and because we have a cool mom right on the screen the next side, and I'm so glad कि वो आज ये सारी चीजें शेयर करी। सो लक्ष्य के साथ जो आपकी केमिस्ट्री दिखती है, आप उसके संग जंप कर रहे हो, यू आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ प्रैंक्स एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। So guys, do watch her page, A Classic Mom. It's an amazing page. You'll see so much of fun thing out there and such happy vibes out there. I must agree. So, the way थैंक you यू। two juggle up and you do all sort of things. So how do you do you plan and shoot the videos? Is he okay with it? Is he camera से shy or what does he think? लक्षु, हाँ, सो बेसिकली आई आई मीन इट्स आई एम थैंकफुल दैट ही इज लाइक दैट। सो ये Okay. होता है ना पेरेंट्स का कि वो मेरे तरह बनना चाहिए उसे या पापा की तरह Right. बनना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ हमारे तरह बिल्कुल भी ना बने। बिल्कुल ना बने। क्योंकि Okay. क्योंकि एज अ चाइल्ड एज अ किड आई वाज अ वेरी शाय चाइल्ड। मैं ना बोल Okay. पाती थी ना कुछ कर पाती थी ना मैं आई वाज नॉट वेरी एक्टिव Okay. अदरवाइज ऑल्सो। हाँ। Okay. सो बस बहुत ही एकेडमिकली इंक्लाइंड थी। जो भी मैं थी वो लक्ष्य नहीं है। दैट्स Sure. अ गुड थिंग। दैट्स अ गुड थिंग एंड थ्रू लक्ष्य मुझे Okay. बहुत सारी चीजें सीखने को मिला है, as a mother also and as a person also, because he Right. is a very curious child और उसको सब चीज Okay. जानना है and he is outspoken, he is very smart, Okay. very good with cameras, and that's how we have Okay. kind of Right. encouraged him to come on camera, and he has his own channel Right. also, Lakshu Reviews करके। so Okay. so That's great. he does his own thing। Okay. so yeah, so that way is he's pretty good, but वही है, he has a mind of his own। so मैं कोई Right. भी चीज उसको फोर्स करके नहीं करती Hmm. उसको। बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड द चैनल थोड़ा प्रेशर था कि हर हफ्ते या हर हाँ, I महीने agree. I इतने agree. वीडियोस होने I चाहिए। agree. अभी Hmm. हम वी आर टेकिंग इट इजी, सो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर Okay. आउट कि उसको क्या करना है। उसको करना तो बहुत चीजें चाहता है पर वो डिसाइड Right. नहीं कर पा रहा है। सो ही विल कम बैक एंड डू दैट। बट वही फॉर माई चैनल ऑल्सो आई एब्सोल्युटली लाइक एन अडल्ट, आई टॉक टू हिम, आई टेल हिम कि Okay. देखो ऐसा है, मेरा एक शूट है, यू वांट टू डू इट। इफ ही सेज नो, आई गिव हिम टाइम, जहां पे Okay. रिक्वायरमेंट होता है उसका, आई जस्ट टेल Okay. हिम दिस इज द स्क्रिप्ट, Okay. इफ यू वांट टू फॉलो इट इट्स ओके। इफ यू हैव, So यूजुअली he's ही ready हैज to jump समथिंग। in. हाँ नहीं, Okay. इसको उसका अपना ही कुछ आइडिया होता है विच इज वेरी कूल। Okay. बहुत सारी Right. चीजें उसने मुझे बोला है कि ऐसे करते हैं मम्मी। ऐसे ठीक Right. है, फाइन, वट एवर इज यू कंफर्टेबल विथ। सो दैट वे अच्छा हो जाता है। नथिंग इज Right. प्लान्ड एज सच। That's so sweet of him, and I think आजकल के बच्चों में ये चीज है. I mean, they are getting opened up to social media and they या want to do a lot of things. राइट। And I mean, parents तो है ही involved, but I think बच्चे हम्म। भी इसमें बहुत ज्यादा involved. Be it a 2-year-old kid or राइट। a तो वो 7 भी to 8 मैं year इतना old child. प्रेशर भी नहीं डालना चाहती, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज Right. देयर एंड दे हैव देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। Of course. तो हम कोई भी बिल्कुल. चीज उसको प्रेशराइज करना नहीं चाहते। वी डोंट वांट हिम टू गेट इनटू दैट थिंग कि मेरे को करना है तो मैं करता हूँ। आप वही करो जो आपको पसंद है। सो दैट्स राइट. व्हाट वी हैव सो मेंटेन्ड। सो या यू अग्री कि मतलब लक्ष्य के साथ ये जो कूल पेरेंटिंग वाली चीज है, मतलब यू आर हम्म। absolutely okay and you're absolutely like friends and are jumping around with him doing all sort of things and all sort of pranks, and और या आप सो ये suggest भी करोगे कि this is the way they should be dealt with, बच्चों को आज इस तरह से ही ट्रीटमेंट चाहिए पेरेंट्स से. देखिए, कोई भी ऐसे मैं बकेट में नहीं डाल सकती पेरेंटिंग को। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट. डू दैट। दो पीपल हैव सेड कि राइट. ये एक इस तरीके का पेरेंटिंग है, बट आई फील राइट. एटलीस्ट आई एम अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स। आई कैन बी अ हेलीकॉप्टर मॉम एट टाइम्स, आई कैन बी अ वेरी
चिल्ड आउट मॉम एट टाइम्स, कभी बहुत right, स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ. इट ऑल right, डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, तो हम वैसे बोल नहीं hmm, सकते हैं. And right, what is school parenting? After all, it's all about like giving the child that much space. तो उतना तो I think in today's day and age उनको थोड़ा space देना चाहिए for them to at least right, become independent, क्योंकि then they become very dependent and then they also start demanding things कि right, ऐसे होना चाहिए तो मुझे ये ला के दो, and because they are all very privileged these days. हमारे right, टाइम में अलग absolutely. था, फॉर एवरी स्मॉल थिंग वी हैड टू रिक्वेस्ट अ पेरेंट कि ये लेके दीजिए या वट एवर, यहाँ Agreed, पे बोलने agreed, से पहले आ जाता है. सो दैट agreed. इज समथिंग दैट आई हैव मेंटेन्ड. मैं इतना ज्यादा स्पॉइल Hmm, नहीं करती उसको इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक कंफर्ट. सो hmm, आई ऑल्सो गिव हिम अ फ्लेवर की, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. आई कम फ्रॉम भुवनेश्वर. right. सो I don't want him to, splurge on things. I don't want him to tell me कि हाँ तो क्या हुआ, ये टूट गया, आप ले Right, आओ और एक, right. That's true. Hmm. this is something that I have kind of always maintained. So that's not cool actually. अगर कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि तो क्या हुआ, आप ले आओ, तो क्या हुआ, मतलब Yeah. ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना. So Mm-hmm. so again, cool क्या है, किसके लिए, सबके लिए different है. So for me, Right. cool is actually what my intent is always, for him to become a good human being. चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, That's true. academics is the बिल्कुल. last in my priority list. Right. तो Agree. वैसे भी Agree. लक्ष्य को इतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, so Okay. academics is always the last. So I feel like Okay. you should become much more or a smarter person rather than Right. be good at academics. अगर Developing आप your वैसे भी, skills. हाँ, आप अगर जाके आप कुछ बोल नहीं पाते हो और एकेडमिक्स में आप Mm-hmm. चाहे फर्स्ट आओ, बट आई यू इन अ रूम फुल ऑफ Agree. पीपल यू हाँ, कांट हाँ. टॉक, व्हाट्स Talk. द Right. पॉइंट ऑफ हैविंग अ फर्स्ट डिग्री और वट एवर डिग्री इट इज. That's true. That's सो true. दैट That's इज true. समथिंग दैट आई हैव ट्राइड कि Hmm. एटलीस्ट यू बिकम अ स्मार्ट चाइल्ड. आप जाओ That's तो true. he can talk to anybody like this. He can manage this life much better than me, I can say. Because yeah, Wow. because he is a social person, I would say. Right. So he Right. can talk to Right. anyone. You give him the phone, he can talk to you for hours, and he'll Wow. So I manage think the conversation. he has a very good influence of his mom because he has been watching you doing all these things. And so he is prepared कि भाई मम्मी ऐसा कर रही है तो मैं तो ऐसे हाँ, करके दिखाऊंगा. in a मतलब मम्मी से दो way, स्टेप आगे निकलना है. in a way what he sees, जो बच्चे देखते हैं वही लर्न करते हैं. चाहे आप Yeah, जितना भी exactly. वो गुट्टी बना के पिलाना चाहो कि तुम्हें ये करना है वो करना है, वो जो देखता है वही सीखता है. Right. So And I think that's आजकल something. last 1.5 year the online school thing which is Yeah. happening, उसकी वजह से भी social media पर kids are getting more active. They are juggling so many things and they are more there on internet and watching things. And जो चीजें उनको नहीं भी पता है, they are getting to know so much things कि like Yeah. Instagram पे ये होता है and we want to do this and we want to do that. So I think वो कहीं ना Right. कहीं एक last 1.5 years has been a lot of given a lot of changes actually, the pattern and the way they grasp Yeah, things. absolutely. Exposure is a lot. So that's where मुझे थोड़ा लगता है कि I also have to learn कि कितना exposure is good और कितना नहीं. Right, absolutely. Because There has totally to be, abstinence is also not so yeah, good. right, कि आप right. completely उसको off the social networking रखो, वो भी अच्छा Right. नहीं है. But बहुत ज्यादा overdoing is also not good. Not good, So right. I also try to maintain a balance between both. Right. And I So agree so कि there yeah, has to be some balance, right. yeah. क्योंकि So, हमेशा वो फोन पकड़ के करना, I mean it's हाँ, that just is like, I think एक 2 साल के बच्चे में भी मैं देख पाती हूँ कि yeah, every time कि I need the phone, मम्मा मुझे फोन हाँ, चाहिए या मुझे फोन हाँ. दे दो. So there has वो been this एक्चुअली constantly पेरेंट्स ही because वो, देते हैं, चाहे जो भी हो, पेरेंट्स ही अपने, I mean they want to हाँ maybe do maybe that could something be, या कुछ करना maybe है, right, हम ही yeah, देते yeah, हैं, फिर हम बोलते हैं कि नहीं करो. So that in could a be a way reason, we yes. only are kind of getting them to do something and then we are Because saying I कि अभी think आप नहीं करो. last 1.5 years बच्चे घर में blocked हैं, तो phone, Yeah. laptop and TV, the only way हाँ. of entertainment. So they are like more into कि अच्छा parents are doing something with the phone, so I should also do that, the same, So Yeah. that is what So influenced them. so mostly वही I try to give him a time, कि आप 1 घंटा आप रखो for Right. screen time, and
everything is including that. तो आपका entertainment time वो 1 घंटा है, क्योंकि already classes, for the classes the first half they are on the they screen. are spending time on screen, right? Yeah, so that way is just timing them and making sure that you get it back on time also is a challenge, but वो करना पड़ता है. So there Right. has So to be a balance. I would ask people who are joining in if you have any questions regarding this parenting thing. So you can just shoot up your comments, your questions, and we'll try कि हम कुछ, if you're having some issues with that also, so we can try like talk it out or Yeah, discuss and absolutely. things, because we have an experienced mom out there. So we have a lot of people joining it. Hi Kaval, hi VS Lifestyle. I don't know the name. Hi Akriti, Yashraj. So I'm just saying hi to them. So if anyone has some questions or has some comments about it, so just shoot down your questions or your comments and we'll try and like discuss and things. So Nora, how did you start doing this influencer thing? कब आपने शुरू किया? कैसे start किया इसको मतलब? How did you get the So it's inspiration been या idea? okay. So it's been many years. I think 5 years तो हो ही गए हैं. Okay, But at okay. that point of time, it was not really influencer marketing at that much, Yeah, agree, speed agree. and this Yes. thing. But when I had started, videos were just starting, and I was more Okay. into writing. So I used to write Okay. on lifestyle and travel and food. Okay. I Okay. started with food and lifestyle. फिर उसके बाद धीरे धीरे, obviously I was a mom at that point of time, so my child was what, around 2-3 years, 3-4 साल Okay. का था. So Okay. we had to travel to the US at that point of time, and Okay. I sat down to search for some videos as to, where to go, what to do if you are traveling with a 4-year-old, Right. but I couldn't find anything. Surprisingly, Okay. no videos, nothing Okay. related to Okay. that. So, हाँ, ट्रैवल पे आपको मिल जाता है, बट ट्रैवलिंग विद किड्स क्या करना चाहिए, क्या लेना Right. चाहिए, all Right. that. Right. So then I kind of thought to myself, ki, let me just document everything when I'm traveling. Okay. So I just took the phone and documented every single thing that we did in that trip. Okay. Okay. It Okay. was a trip to the United States, and we were covering all the places for children actually. So from Disney Okay. World to Legoland to Animal Kingdom, Okay. हम मतलब itinerary वैसे ही set हुआ था. So Okay. in the initial videos, if you actually go down to YouTube and type a classic mom, in the initial videos you will see mostly traveling with kids वाले Yeah. videos ज़्यादा Yeah. है. Right. What should you carry, what should you do, what when you're traveling and all that. So I Right. thought of starting something, and I always had videos in my mind, Okay. कि करना ही है. I was very inspired by some channels, Okay. but then I didn't know how to start, so I just documented, and then I just Right. started making. That was the start. And Okay. then I continued doing that, because So continue so रखना भी so मुश्किल I काम think है. अगर of course जब आपने start किया था तब ये influencer term बहुत ज़्यादा नहीं था, but I हाँ think हाँ हाँ since आपने बहुत पहले शुरू किया, so there are a lot of things that people could actually see कि अगर आप travel कर रहे हैं with kids, so what all you need to do, and I think people can get a lot of idea from the videos and they can get to yeah understand. So yeah tell us about some of the brands that you have collaborated, and we would love to know about those brands also. see brand wise काफी brands हैं जो उनके साथ मैंने collaborate किया. Some of them that you actually will see on YouTube में you will see Chhota Bheem was a big brand with whom Okay. we Okay. collaborated. So Kung Fu Dhamaka जब आया था, so Okay. they kind of reached out to me saying that they wanted me to make, because I make cooking videos also. So Okay. initially, there's a little backstory to this. So before cooking videos, actually, I was only doing, stuff related to parenting, travel, ये सब था. Okay. Okay. But then when I was in Gurgaon for a short period of time, I came across another mom who was a Okay. superb cook. She Okay. makes some really amazing dishes. So Okay. उनको मैंने बुला लिया. I said, why don't you come and let's just make something together. So let's make some Okay. tiffin recipes. Okay. So Okay. then
she made that, and that Okay. video became the highest viewed video Okay. on my channel. So that went Okay. to some, like, 3-4 lakhs, 5 lakhs at that point of time, and then now though it's been Okay. growing since then. So then I Okay. thought ki there is a big market for cooking for kids. So I focused on cooking for kids. So जो भी आप मेरे चैनल में देखोगे any recipe, it's mostly with kids, For kids. for kids. I'm sorry. So and I started the term quick tiffin recipes. So if you Okay. actually search, तो मेरे सारे tiffin recipes आ जाएंगे. So seeing that, the छोटा भीम company जो है उनका Green Rock Okay. something है, I don't remember the thing. So they wanted me to make laddus for Bhim. Okay. And so जो वो होता है ना, mascot आता है घर and all that. So we Right. made Right. a couple of videos. So you will see some Okay. videos on my channel, and you will see some videos on Lakshu's channel as well. So it was basically a collab for both our channels with this Okay. company. So it was like a Okay. package deal. So that is one. Then there was, I would not say a brand, but yeah, दैनिक जागरण, हर Okay. जिंदगी करके उनका एक चैनल है. Right. So they wanted again me to do a couple of videos with respect to quick tiffin Okay. recipes. So Okay. tied up with them. Then there are other Okay. brands, a lot of olive oil brand. चाहे वो टाटा Okay. टी हो, you will see Right. recently I did a lifestyle brand. Uh, I'm forgetting. So there are many. So you will see Mama Earth. You'll see many brands in my So feed and video. So the once you collab naturally, with hmm. these brands, so is it kind of like you truly trust those brands, truly have used their products, and then you Hmm. kind of like talk about it and stuff like that? Yeah, so like I said, those brands that I collab with, I do a little bit of research before doing that. If with a new Okay. brand, I do some Okay. research and I see whether it's a fit for my channel. इतना ज्यादा रिव्यू नहीं कर सकती, because then I have to buy and use it, and then I see whether it Right. ठीक नहीं है, तो वो इतना I would not say. But I do a search before actually Okay. signing up for with a brand. Whether Okay. it's whether I want to associate with them or they Right. coming to me, तो वो मैं थोड़ा बहुत वो सर्च करती हूँ. Mm-hmm. And फिर मैं देखती हूँ कि whether whether I will also fit in that कि नहीं, क्योंकि Right. ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स या बहुत सारे चीजें होती हैं जो आप उसमें फिट बैठते ही नहीं हो. सो I कभी agree. कभी I मैंने agree. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को ना बोला है कि Okay. दिस इज जस्ट नॉट फॉर मी, Okay. सो So any उस one तरीके से. dream brand that you have जिसके साथ आप collab करना चाहोगे and you're planning, this should come. Like one such big brand or a dream brand of yours. And you really See, hope there कि it is comes to one your brand place. which I really regret मैं जो नहीं कर पाई was Johnson and Okay. Johnson's. Okay. तो Johnson and Johnson's tied up with a lot of moms उस time पे. Okay. Okay. And they do that regularly. I think they do one or the other event with Right. moms. तो 2 बार उन्होंने शायद से किया. पहली बार Okay. again, so something or the other comes up. उस time पे I was not available. The second event they did, it kind of collided with my son's birthday. तो Okay. फिर मैं जा नहीं पाई. So Okay. that was one regret that I feel वो मैं नहीं कर पाई. बाकी कोई भी brand, I mean, it's not really. See, again, I see it very differently. मैं जो content create करती हूँ, it was never focused on getting business or doing any sort of a Right. business collaboration. Okay. वो बाय चांस अगर इफ वो ब्रांड्स को लगता है कि मैं Right. उनका मैसेज ठीक से दे पाती हूँ, एंड मोस्टली वो सब अपना वो भी रिसर्च करके ही आते हैं मेरे पास. Correct. They That's see true. That's true. my videos and फिर उनको अच्छा लगता है, so Right. that's how they come to me and then say, oh yeah, so that's called Pure Cult. Abhi recently Okay. the brand with whom I kind of collaborated. Okay. So they loved Okay. my videos. So I kind of told them, I said, see, I also don't have much time in hand right now because I'm working full time. So I can only do my work during the weekends. So they were very driven and they really wanted to do a collab. So that is something Okay. that I really enjoy.
उससे मुझे किक राइट, मिलता है। मुझे वो नहीं किक मिलता है कि मैंने ये बहुत बड़ा ब्रांड, सारे बड़े ब्रांड्स अग्री, आई वर्क विद, अग्री, सो वेदर इट्स अग्री, मामा, राइट, डेटॉल, HLL, every brand, Lay's, did that packet में, they had our faces. So that campaign आई I've done. एग्री दिस So थिंग, आई that's एग्री, आई something एग्री. that I don't really, I mean, of course, it's a great thing to be in, in And I my think, profile. somewhat, But kind of quite agree to your this point because, my intention of starting and doing जी, this live things every alternate Sundays, I'm trying to हम्म, get hook on to, a person I know or has been doing something very, very amazing. And जी, the only reason is that I want her or him to connect here and people should come हम्म, and talk and discuss and have a lot of discussion. That's the only point. And plus, कि मैं छोटे ब्रांड्स और छोटे बिजनेस को ज्यादा प्रमोट कर पाऊँ, लोकल ब्रांड्स को हम्म. ज्यादा सपोर्ट कर पाऊँ एंड In fact, गेट of मोर late, like स्टफ. after या, lockdown, I think मेरा भी वही intention रहा है कि छोटे brands और local brands basically, राइट, जैसे I am kind of obsessed with sarees, so मैं वो local brands काफी देखती हूँ, I search for it and I see राइट. how I can promote them. I mean, even if I don't get into an arrangement with them or anything, but I kind of try to do that. So yeah, that's one good point that you're doing. That's interesting. या, वो या. अच्छा एंड सो आप आई कर रहे हो. थिंक पीपल मतलब उनको बहुत नेचुरल लगता है, वो ज्वाइन करते हैं, बात करते हैं, जी. अपनी प्रॉब्लम्स भी रखते हैं, वेदर इट्स फॉर फॉर योर हेल्थ, फॉर योर किड्स, फॉर योर होम, आई मीन एनीथिंग, सो इट हैज टू बी देयर that जी. people should connect and talk and discuss. So that is what my whole motive is, to come here and let's have a fun session and let's talk and discuss and get into things. So That's interesting. what all you are planning future में, हम और क्या क्या आपके चैनल पर देख पाएंगे, लोग और क्या क्या इंटरेस्टिंग देख सकते हैं? So ऐसे तो अभी I haven't really planned a content calendar right now, though I wanted to. वो मैं बहुत ओके, जल्दी करूँगी. But what I really want to do right now is to start a podcast. वो ओके, मेरा एक प्लान है जो ओके, मैं करूँगी, I think most definitely. So मैं so I'll connect with the right kind of audience. Of course, it will be around parenting and mothers राइट, and something. राइट. So that's something that I'm working on. See, everyone is extraordinary, but I just wanted through my channel, through my videos, मैं ये चाहती थी कि इतने सारे stories होते हैं while राइट, when you are a mother. Like I am facing a lot of challenges, जबकि मैं एक full time, actually I've always been there for my son, in the initial 7-8 years. फिर अभी ओके. I've started working. ठीक है. So of course there is a stretch कि मुझे ये भी करना है, मुझे अपना आई जॉब का एग्री. भी करना है, ट्रू, मुझे कंटेंट भी ट्रू, क्रिएट करना है, and I have to ट्रू. give that much time to my son So you're also. like kind of So juggling of things. so ऐसे बहुत सारे stories. So there are many people whom I have connected. So there's a mother who's a pilot. So Oh, I really wonder वो क्या करती होंगी, कैसे करती होंगी, how is she flying, and she's managing home and she's managing the child. So all these right. stories I want people to, because there were many things जो मैं एक mother होने के बाद ही मुझे realize हुआ. So Agree. there are many things जो discuss नहीं होता है in an open हाँ, forum. uh, be it going through depression, be it going through these emotional turmoil, क्योंकि आपसे expectations कुछ होती हैं, आप करना कुछ चाहते हो, करते कुछ और हो. So agree. ये सब चीजें it's not there And on I'm sure social media. actually, there'll be a lot of parents, a lot of mothers who would, want Yeah, to talk about it. And, yeah, कुछ चीजें हैं जो उनके अंदर होंगे and they would like to spill the beans and सब कुछ exactly. वो express करना चाहती होंगी. और So वो that's, बोल रहे that's, हैं that's all. कि it's not audible. Priyanka is saying it's not audible. I I can think, hear you no, but clearly. yeah, even I can hear you. Is it audible now? Because I think the I hope audio is it's audible. there. Let me just check. I think everything is on. I don't know.
Okay, let's Were we continue. not? Let's see अगर वो Were we not अगर audible for the whole time? Or was it that? कि we were not audible for the whole time? पता नहीं I hope so it is not. So can everyone hear us? अगर आप live देख रहे हैं, please drop a comment so that I could know that you could hear us. I mean, we were literally talking it off for 40 minutes. I know. I think I I think it should be Okay, it audible. should be Hi audible. Pooja, hi Priyanka, Meenu, hi Sindal Alps. Okay, hi Charming Desert Rose. How are you? So a lot of people again joining us in. So I think you know the ये जो आपने podcast वाला idea का I think it Yeah. sounds quite interesting and I think a lot of mothers would could you can see on your lips moving sounds etc. I भाग्यश्री, mean, तो आपके एंड पे आई थिंक दे कांट हियर. आई डोंट नो but इफ I यू. don't know. I mean, my audio is connected. Hi हाँ, Pooja, can आई you कैन hear हियर me? यू. आई कैन हियर यू Uh, completely, so I don't yeah, know. even I can hear you. I don't know. I mean, there's some issue. So I don't know. I mean, I have to check after We'll this. have I to mean, continue because then हाँ, I think yeah. uh, let's So continue and see. I think a lot of mothers जो है ना वो I think would love to talk and discuss and Yeah, you know yeah, उनकी yeah. बहुत सारी queries भी होती हैं कई बार कुछ dilemma भी होता है जो वो you know चाहती है सो कि एक ऐसे दूसरी फोरम्स ही मदर उनको नहीं है, बताए. अभी आजकल होने लगे हैं, बट ऐसे कोई हम्म. फोरम ही नहीं है जहाँ पे यू कैन एक्चुअली टॉक योर हार्ट आउट. ओके, Right. while you are going through the pregnancy, डिलीवरी, पोस्टपार्टम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं. यू नो, Agree. यू टेंड Right. टू लाइक आई यूज टू क्राई एट द ड्रॉप ऑफ हैट. वैसे भी आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मुझे पर हर Okay. बात पे रोना आता था. सो पीपल यूज टू से तुम इतना रो क्यों रहे, कोई बात ही नहीं है इसमें रोने का. बट आई कुडंट हेल्प इट, यू नो, एंड आई डिडंट नो Mm-hmm. दैट आई मीन इट विल हैपन, समथिंग लाइक दिस Mm-hmm. आर सपोज टू हैपन. सो या, सो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि ओपनली लोग डिस्कस नहीं करते हैं. सो दैट इज Mm-hmm. समथिंग दैट आई रियली वांट टू कवर इन माय पॉडकास्ट. सो ये मैं अभी प्लान Right. कर रही हूँ. Though I've spoken to a Sure, and couple I of think mothers. that's a great idea. It sounds quite good, जी. and I think all the mothers could actually you know आपके साथ podcast पे connect कर सकते हैं. They could actually discuss and talk and you know अगर कुछ queries हैं कुछ comment है they could actually जी. share and exchange ideas as well. So we're So looking it's forward it's to it's it. really Yeah. fun thing. मैं पहले भी ऐसे collabs कर चुकी हूँ with mothers for my Okay. cooking, you know, this thing series. So for quick Okay. tiffin recipes, I have collaborated with many moms. You can see all those videos on my channel. So are you coming up So with more such recipes see, वो like नहीं in हो future पाता months? अभी इसलिए because of lockdown. क्योंकि लॉकडाउन से Yeah. पहले तक you know every month I tried to get one Yeah. mother to my house and we used to cook together, do I some know fun it's quite things. difficult now. It's quite अभी थोड़ा difficult now. डिफिकल्ट हो गया, तो आई ट्राई टू डू इट ऑनलाइन पर वो मजा नहीं आता. सो I agree. या, Yeah, I सो think या, सो everything एटलीस्ट has दिस. gone online. Everything has जी. to be there online. I mean, I don't know how we are going to, you know, we are juggling with this for the like 1.5 years और अब इसको हम राइट आगे लेकर चलने वाले हैं. For राइट some राइट. more years, I don't know how many years, आई डोंट we नो, have to be बट like fit या. in this internet. जी. So yeah, let's see. So I think that was quite a good session. हमने बहुत सारी चीजें discuss की है. Hi Aishwarya. So people still joining in. So I think I mean we are excited about your podcast and हम जल्दी सुनना चाहेंगे आपके podcast को भी. And of course, श्योर. you know, people can join and come up on your page. And if you have some queries, if you want to know, if you can chit chat, if you want to discuss, our pages are always available. So just drop a hi or DM us. We can definitely have a you know discussion out there and come up with more such live sessions and have more people you know together. या, एब्सोल्युटली फन. So thank you so much Noora because you know थैंक यू Sunday के दिन भाग्यश्री. पे आपने time निकाला for this नो नो, नो and प्रॉब्लम it एट was ऑल. great talking to you after a long time and I'm looking सेम forward हियर. कि हम और ऐसे discussions या, आगे भी करते रहेंगे. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. थैंक यू चलो सो thank you मच so फॉर much Noora. इनवाइटिंग. थैंक यू. See you See soon. Bye you. bye. Bye everyone. Bye.